तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बिना किसी और बात किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो एज पर माय व्यूअर्स रिक्वेस्ट, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ दिस वीडियो इज नॉट फॉर वन पर्सन, बट मैंने यही मिस्टेक्स अपने कई स्टूडेंट्स को करते देखा है इन माय टीचिंग करियर। नाउ इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट 5 कॉमन grammatical mistakes that almost everyone makes and how can you avoid them. So, number one, framing questions in an incorrect pattern. First, coming to these sentences, how we actually pronounce them. You went out yesterday, na. We met 1 month before, no. We will catch up later, हाँ. तो गाइज हम सारे सेंटेंसेस के पीछे क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं। क्यों? आई टेल यू द रीज़न बिहाइंड इट। वो इसलिए कॉज हम अपने नेटिव लैंग्वेज से ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस फ्रेम करते वक्त, कॉज ऑफ विच वी एंड अप यूजिंग सम ऑफ दोज वर्ड्स इन द लास्ट फॉर देम टू साउंड लाइक वी हैव फ्रेम्ड देम इन इंग्लिश। अब हम फर्स्ट सेंटेंस को ही ले लें ना, हमारे नेटिव लैंग्वेज का वर्ड है। अब हमारी कॉमन मिस्टेक्स हमने समझ ली है, तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं? लेट मी टेल यू, इट्स वेरी सिंपल। ट्रस्ट मी गाइज, जस्ट जो क्वेश्चन हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के एंड में पूछते हैं वही हमें इंग्लिश में पहले पूछना होता है। सो गाइज, इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप क्वेश्चंस वर्ड्स यूज़ करें बेस्ड ऑन द कंडीशंस लाइक वो और वॉट, या तो आप हेल्पिंग वर्ब्स जैसे वर्ड्स को यूज़ करें, जैसे कि डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, इज, आर, एग्जेट्रा। कॉज ये वर्ड्स ऐसे हैं कि ये आपको पहले से ही प्रिपेयर एंड कॉन्शियस कर देते हैं कि अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी तरफ, फॉर यू टू बी प्रिपेयर्ड टू आंसर इट लाइक अ प्रो English speaker. So instead of asking you went out yesterday, na, you can actually ask, did you went out yesterday? I hope we got clear with this. So guys, now you can actually create a plan for yourself by listening, speaking, writing, reading English oriented content to improve your English speaking skills. So guys, starting with the second mistake is using the at wrong place. But before that guys, मैं ये बता दूँ कि मैंने बहुत लोगों को दी की प्रोनाउंसिएशन गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हुए कई बार सुना है। दे एक्चुअली प्रोनाउंस इट एज द, बट इन रियल पैटर्न द प्रोनाउंसिएशन इज दी. So now the is only used with a noun, which is one kind of a noun. For example, the first woman to climb Mount Everest, Junko Tebei. While we use a when a noun represents one of many. For example, a student, a pencil. Like we cannot say I'm from the India, but instead we can say I'm from India. Unless the country includes state, kingdom or republic, example the United States of America. So guys, now starting with the third one is excessive usage of filler word. Now filler words are something which we all love, but we can actually reduce their counts by improving our conversations. Okay, improve करने के दो ही तरीके हैं. Number one, joining Toastmasters club, जो कि आई ऑल्सो नो कि वी ऑल कैन नॉट अफोर्ड इट, बट द सेकेंड वे जो कि पॉकेट फ्रेंडली है, वी ऑल कैन अप्लाई इट, इज सेल्फ एनालिसिस. सो फॉर दैट you can record your voice in your phone by giving yourself a topic to speak and count how many times you are using these filler words like in between of the conversation, while to think what next is to be said. सो पहले ये समझ लेते हैं कि टोस्ट मास्टर्स होता क्या है. सो टोस्ट मास्टर इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट educational organization that teaches public speaking and leadership skills through a worldwide network of clubs. Since 1924, Toastmasters International has helped people from diverse backgrounds become more confident speakers, communicators, and leaders. So guys, if you apply the correction, result you with a effective conversation in no time. People will love listening you, especially at the time of public speaking.
So, with number 4, starting with the biggest confusion in did and didn't. So now easiest way to solve this is, as didn't already explains कि it's from the past, so you need not again convey it from the main verb कि it has happened in the past. For example, I didn't wash my clothes, but instead you can say I didn't wash my clothes. Similarly, I didn't like the car. You can say I didn't like the car. So similarly, when you talk about did, here are few examples using did. So number 1, did you eat your lunch? Which is wrong. You can instead say, did you eat your lunch? So guys, now coming to the very last one is THEIR there and THERE their mistakes. Now, for example, using there indicates them. Number 1, there are some chocolates in the box. There must be a good reason to it. Coming to the THEIR one, which indicates that they are owned by them. Number 1, their money. Number 2, their house. Now guys, here is a small exercise for you जिसको आप वीडियो पॉज करके आंसर करें in the comment section below if you wish to. Guys, these are the questions which you need to answer. Now guys, heading up with the bonus tip. So this is the most important tip ever, is to speak, and to speak. Now this is the base to achieve fluency in English speaking. So guys, now when you will apply the number 5 tip, you will definitely attain fluency in English for sure. But when you're applying, you need to continuously apply the correction of previously 5 common mistakes which we analyzed and corrected. So the addition of 5 corrected mistakes plus regularly speaking in English will result you into a good speaker in no time. So guys, आज की मेरी ये वीडियो से आपकी एक भी मिस्टेक क्लियर हुई हो तो एक लाइक करते जाना एंड शेयर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में फॉर देम टू गेट करेक्टेड टू. Until then, keep learning, keep improving and start speaking. See you soon.